हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और मैं रहता हूँ जापान में. सो बेसिकली लास्ट ईयर आई केम हियर, देन आई वाज लाइक आफ्टर 2 to 3 months आई रियलाइज दैट आई नीड टू सेंड सम फंड इन इंडिया फॉर माई फैमिली. लेकिन उसमें क्या था, एक्चुअली ना ये बहुत सस्ता चल रहा था. आई थिंक 0.4 के आसपास हो गया था. तब थोड़ा यू कैन से दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सेंड बिकॉज rates were also done. So then I thought that it will be okay, like it is better to send after 2 to 3 months. Somehow rate goes up. तो लेकिन क्या होता है यहाँ पे ना, जो जैसे हम यहाँ पर अगर सैलरीड वर्कर्स हैं तो हमारे जो सैलरी का कुछ पोर्शन होता है वो यहाँ पे ऐसे टैक्स करता है. और अगर वो हम उसको टैक्स को बचाने के लिए, तो अगर हम अपनी फैमिली को या फिर किसी डिपेंडेंट को हम स्पाउस को यहाँ पे पैसा भेजते हैं, तो मे बी वी कैन सेव द टैक्स दैट इज अराउंड अप टू यू कैन से 10 मान. इन जापान यू कैन से अप टू 1 lakh yen something. But it also depends on your salary. Like if, for example, if your salary, like sometimes you can save up to two like no more than that. That depends on your salary. So I'm just telling you approximate figure. तो मेरी बात ये कि मुझे पैसा भेजना था और मुझे अपना टैक्स बचाना था यहाँ पे. लेकिन अगर जो जर्मनी चेन उस समय सस्ता था, तो मैं हाउ टू डू दैट. तो फिर भाई मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि भाई हम यहाँ पे जापान से इंडिया में पैसा कैसे भेज सकते हैं. तो one of the best method is SBI. You can go to the SBI, but and then you can tell them that I need to make some remittance. Then after doing remittance, maybe you're gonna pay some charges for remittance, then you'll get the best rate in the market for the SBI. Second number is that there are many options. Which like here is one of the best option is the Comini. You can also go to the Comini and tell them that you want to send the money, but there is a different process to like for sending them. For example, while researching, I found this card. This is JRF. I won't say the number. So other than that, like Remittance and some organization also they provide this type of ATM cards, and these are actually not the ATM cards, the money card you can say. You're gonna go to the Comini ATM or that Yucho ATM, that Japan Post Bank. You will enter this card and you will enter the money, and money will be stored in this card. And using the some app or the calling function, so you can ask them to like, for example, you want to send 1 lakh yen at some point of time, then at that point of time somehow you are getting good rates or as per your requirement or emergency. So during that time you can already you have money in that card. You can just call them or you use their application also, which are available I think on the Play Store, and you can directly put the transaction forward. Then your money will be transferred into that maybe they have some tie with the Indian government or maybe Indian banks. They will transfer that money into an Indian account of your that spouse or your family, your mother, or even yourself also. So another one is that. One more method is directly you can use. So for example, you are having that NRO account in India, and for that you can have that account, and using this Japan Post. In using the Japan Post, you can go to Japan Post and you can say, I want to just make some remittance to India. So you can also make that, but that is also like not that much cheap. I found it's a little bit expensive compared to that JRF. But Korea remittance is also cheap, but there are there are what you say that conversion rates. The conversion rates are very 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 cheap, I guess. So please don't. It's up to you if you want to use them or not. But my personal opinion is that कि भाई मेरे को सबसे अच्छा लगा JRF. नंबर 2, नंबर 1 लगा मुझे 22. ये ऐप आई थिंक US का ऐप है, and I use this app, and now I'm perfectly transferring the money to India to my any of the relatives, any of my family member, any of myself. Till now, I didn't found any problem. So one of the best option from transfer money from Japan to India is that use Wise app. I'll it's my personal opinion because I'm using this app around you can say for more than 1 year. But अब ये तो हम ट्रांसफर कैसे करना चाहिए, बट अब ट्रांसफर करने का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको दैट आई विल शो यू आल्सो. बट बिफोर देन दैट यू नीड सम डॉक्यूमेंटेशन. फॉर एग्जांपल इन जापान लाइक some documents are required for making remittance. So one of the document is you will get that residence card while entering into Japan, or another document is the my number card. It is same like in India we are having my Aadhaar card. So my number card is like you can just consider as Aadhaar in India, and you can compare it to them. You can just have these. You need to have both these cards, and you will go to that Wise app, and you will send the submit the documents. They will quickly verify those documents. Maybe 5 minutes process there, and after verifying, you can set up the transfer. But actually, Wise is not a bank. So from your bank account, like from your salary bank account, your personal bank account, your saving bank account, you need to transfer the money from that Japan domestic bank account to the Wise bank account they will provide.
So that for that to happen, you need to have either the go to the that UCHO account. You'll go to the post office and you'll open an account, or you can go to the domestic bank account. And but one of the best option I have found is a UCHO account only, because Japan Post are everywhere, like, and very cheap compared to other banks. And currently they are also providing online transaction facility using UCHO direct something. So I'm using that only. So अभी मैं क्या करता हूँ कि like when I'm getting my salary, like from some another bank I'm getting the salary. So what I'm doing is I'm using that money from withdrawing that money, and after putting it in the or requesting my company to put it in that Japan Bank Post account. And I have the net banking application. It is very, you can get very easily compared to other bank, because Japan rules are very strict. You need to do a lot of documentation, and like it's not like in India. You can just go and put thumbs up and will open an account. So it's a very hectic process. So one of the easiest process and convenient process I have found is only UCHO Direct Plus account. Request if you don't know Japanese, then request your company members. That's what I did. But even I don't know Japanese, but I request them because it will save time for me. So if you want to save time, and after realizing that it is very important to save money, then you can set up transfer. Or if you know Japanese, you can directly go to the Japan Post Bank account and request them. Ato icho ginko ni ginko ja akitai no de to onegai ga arun desu. So after saying use this type of phrase, and you can open bank account by providing some documents, which I have already told you. That is one of the residence card. Sometimes photo is required, sometimes, and my number card. This is very important. So when we come to Japan, regarding my number card, bhai, one of the best card है यहाँ पे use करने के लिए. उसपे बड़े बात है, as a foreigner you will get the money in that card around 20,000 Japanese yen, and you can use it like company stores, purchase anything for health insurance. There are a lot of options. So Japan government is very helping in terms of employment, in terms of support, in terms of providing facilities compared to other countries. So now I'll tell you like how to use set up transfer from Wise app to India. Using I have the application in my phone, and I will show you the steps, and you can easily just follow them. It's very like a 2 minutes process, and you can in 2 minutes you can send money from Japan to India. So if you are in Japan and you're working, you came for your first time, if you want to send money to your family, your dependents in India, so please just follow these steps blindly, and you won't have any problem, that I show. But I'll tell you that if the language Japanese is really like if you know a little bit Japanese, it will be helpful, because the Japan Post Bank app is actually in Japanese only. Wise Bank is okay, you can use your English language, that you don't have any problem while setting the money. While transferring money from your Japan Post Bank account to Wise account, then you have to know a little bit Japanese for first time only. Then there are some basic steps, because the beneficiary will save in your Japan account that UCHO bank account passbook. Just go and next time you just have to select input money, and there's an app using face authentication or the password, you can just send the money. But for the first time it is a little bit hectic. For that I'll tell you a trick. You can use Google Lens. Using another mobile, you can just use Google Lens to translate that will convert into English, and it will be helpful to do. Because I know Japanese, but I don't know how most of the kanjis, because kanjis part is very difficult. So then I realized I used this translate Google Lens app, and I did in 2 minutes or 3 minutes only. Now every day I'm sending money in 2 or 3 minutes. I'll tell you one of the best benefit of Wise app. None of the other app will provide. Though I'm not sponsoring Wise app, but I'm telling you the benefits. For example, अभी जो मेरा रेट है 1 लाख का मुझे 60,000 मिलता है आज. सपोज वाइज ऐप क्या करता है, आपको टाइम देता है. फॉर एग्जांपल 1 लाख आपने ट्रांसफर किए, then they will tell you that in 95 hours, coming 95 hours, you need to send money from your Japan Post Bank account to their Wise account. Then if they will get the money within the time period, then they will transfer the money to your dependent account, your account you have set up as a beneficiary account in the Wise app. So meanwhile in 95 hours somehow you have booked, and that you're getting, for example, 62,000 instead of 60,000. You can cancel that previous transfer, and you can make new transfer, and you can send the money. So it is up to you. So it's one of the best benefit is you will get the money best transfer in the market as per your requirement, as per your choice. So now I'm going to tell you how to use Wise app and the complete process. Just follow these simple steps. तो ये है हमारा वाइज ऐप, और ये इसका यूआई है. यहाँ पर आप अपना पिन एंटर करेंगे. तो पिन एंटर करने के बाद आपको जैसे कि मेरा आप यूआई देख पा रहे होंगे,
तो मैंने कई मल्टीपल ट्रांसफर नीचे दिए गए सेंड बटन को आप क्लिक करेंगे. आफ्टर दैट व्हेन यू वांट क्लिक you will get that two option, either it is international or the same currency. So mainly the Wise app is used for like international remittances. So it will automatically show that JPY to INR because I have already made these conditions by default. तो अभी मुझे 2 लाख सेट किया यहाँ पे, 2 लाख ये मुझे इंडिया में भेजने हैं. तो आप कन्वर्जन रेट देख पा रहे हैं जो कन्वर्जन रेट हिसाब से है. फिर यहाँ पे नीचे आके आप इस कंपेयर डेटा को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख भी पाएंगे बाकी और भी सारी ऐप्स हैं. तो आपको कितना आपको कन्वर्जन रेट और कंपेयर ऐप्स के कंपेरिजन में अच्छा मिल रहा है. तो आप कभी कभी ये कम भी होता है लेकिन इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट. तो ये कन्वर्जन रेट जो मुझे मिला है 0.605640 का है. और यहाँ पे मैं सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि दिस अमाउंट शुड बी कम अराउंड लाइक 65 आवर्स लाइक एज पर प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट. तो मेरे पास 65 घंटे हैं तो मैं आराम से पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए. लेकिन उस समय तक ये पैसा उनके अकाउंट में पहुँचना चाहिए ताकि वो हमारा जो पैसा है आगे फॉरवर्ड करने के लिए प्रोसेस इनिशिएट कर सकें. जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा वो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा टैब में, वो बेनिफिशियरी का डिटेल पूछेगा. इफ यू हैव ऑलरेडी फिल्ड अप दैट इट विल जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट और यू कैन जस्ट ऐड न्यू बेनिफिशियरी. फिर इसके बाद आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं क्योंकि जैसे कभी यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है तो आप यूक्रेन के कुछ स्पेशल पार्ट्स में आप पैसा नहीं भेज सकते. तो ऐसा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन स्टेटेड रहती हैं. उसके अलावा आप किसको भेज रहे हैं, फैमिली को भेज रहे हैं, फ्रेंड्स को भेज रहे हैं, क्या आपकी सेविंग है, क्या आपने बोरो किया है, वो तो कुछ एज पर जापान गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन यू हैव टू जस्ट फॉलो सम सिंपल स्टेप्स देन यू कैन जस्ट पुट यस टू प्रोसीड टू नेक्स्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट. तो मैंने सारी टर्म्स इन्होंने फिल कर दी हैं अभी एग्री करने के बाद. तो यहाँ पे फिर अब जो मुझे अपना पैसा है वो मुझे भेजना है अपने बैंक अकाउंट से, आइदर इट इज सैलरी और माई सेविंग बैंक अकाउंट टू दैट वाइज अकाउंट, देन दे विल ट्रांसफर. तो अभी ये हमें पूछ रहे हैं कि भाई आप कैसे भेजना चाहते हो, आइदर यू गो टू मैनुअल बैंक ट्रांसफर और यू हैव डेबिट कार्ड. बट एक्चुअली क्या है जापान में डेबिट कार्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लाइक कंसेप्ट इंडिया ऐसा कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे. सो आई विल प्रेफर दिस मैनुअल बैंक ऑप्शन एंड फॉर दैट आई नीड टू पे अराउंड 1800 JPY एज ए कमीशन टू दैट वाइज. तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे वाइज का अकाउंट पता चलेगा एक, और बैंक अकाउंट नंबर वगैरह मतलब जो बैंक अकाउंट डिटेल्स होती हैं वाइज की वहाँ पे शो करेंगे और बोलेंगे आपको इतने ही एग्जैक्ट अमाउंट अपने अपने बैंक अकाउंट से, इनका कुछ एल्गोरिथम होता है इसलिए ऐसा बोलते हैं लोग, तो अपने ही बैंक अकाउंट से वाइज के बैंक अकाउंट में भेजना है जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है बाय द गिवन टाइम पीरियड टू गेट द गारंटीड एक्सचेंज रेट. देन यहाँ पे आई विल प्रेस दैट आई विल ट्रांसफर माई मनी लेटर और मैं ऐप को एग्जिट कर दूंगा. उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यूचो की बैंक अकाउंट ऐप होती है यूचो डायरेक्ट प्लस करके, उसको खोलूँगा. या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं बैंक यूचो बैंक जाऊँ, मेरे पास उस उनका मैनुअली जाके उनको बोलूँ भाई मुझे इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है अपने बैंक अकाउंट से, जैसे हम बैंक ट्रांसफ़र करते हैं नॉर्मल एज इन इंडिया और इन एनी अदर कंट्री. बट मैं पूरा प्रोसेस ऑनलाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ 2 मिनट लगती हैं इंडिया जापान से इंडिया पैसा भेजने में. तो वो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ. तो अभी मैं यूट्यूब डायरेक्ट प्लस ऐप खोलूँगा और वहाँ पे मैं ये सारा जो प्रोसेस है वो दिखाऊँगा आपको करके. तो ये मैंने यूट्यूब डायरेक्ट ऐप खोली, यहाँ पे भी इनका कुछ पासवर्ड रहता है जिससे आप सम इनिशियल स्टेप्स यू हैव टू फॉलो दैट. बस कुछ नहीं करना. अभी मेरे अकाउंट में मात्र 2200 ये नहीं है, लेकिन मैंने इससे पहले ट्रांसफ़र किया था. तो आपको ये थर्ड वाला बटन जो दिख रहा है आपको 2 एरो, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये सिंपल बेसिक स्टेप्स आप मेरी स्क्रीन पे भी जाके भी फॉलो कर सकते हो. यहाँ पे अकाउंट में वगैरह डाल देंगे. यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन है. पहला यूचो का बैंक का है, दूसरा किसी और बैंक का है, तीसरा मुझे भी नहीं पता, एंड फोर्थ इज आई थिंक लाइक जो आपने ऑलरेडी बेनिफिशियरी सेव कर रखे हैं. तो आपको फर्स्ट टाइम भेजने के लिए आपको सेकंड वाला ऑप्शन यूज़ करना है. उसके बाद आपके जो बेनिफिशियरी फोर्थ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे. तो आपको फोर्थ वाला ऑप्शन में जाके बस उसको क्लिक करके अपना पैसा ट्रांसफर करना है. वो सिर्फ 1 मिनट लगता है उसमें. तो अभी मैं आपको सेकंड ऑप्शन करके दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा कन्वीनियंस के लिए. तो यहाँ पे बहुत सारे बैंक के रखे हैं तो मैंने पेपे सेलेक्ट किया, पेपे गिंको. यहाँ पे मैं ऊपर पूछ रहा है ब्रांच का नाम क्या है, शितेन में. यहाँ पे मैं जैपनीज़ कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ. तो जैसे कि बाइस का जो अकाउंट जो यहाँ पे उन्होंने अकाउंट नंबर डिटेल्स दी थी वहाँ पे शिराकावा करके कुछ था, मैंने यहाँ पे शिराकावा इनपुट करूँगा. तो उसके बाद ये शिराकावा की जो ब्रांच होगा वो यहाँ पे शो करने लगेगा. तो यहाँ पे आ गया है शिराकावा ब्रांच. तो यहाँ पे भी मैं अपना जितना पैसा ट्रांसफ़र करना है वो यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दूँगा, वो एग्जैक्ट अमाउंट. तो आपको यहाँ पे लिखा भी है कि एक्जैक्टली यू हैव टू ट्रांसफर दैट गिवन अमाउंट ओनली, अदरवाइज द एल्गोरिथम बाइज एल्गोरिथम वोंट वर्क, देन योर मनी विल बी स्टक समटाइम्स. तो 1-2 पॉइंट्स हैं, थोड़ा ध्यान रखना है.
ये सारी डिटेल्स मैंने जो भरी हैं अभी सारी वो बाइस के अकाउंट पेज से जिन्होंने मेंशन कर रखी थी, जैसे इट इज़ सिंपल बैंक ट्रांसफर एज लाइक इन इंडिया ओनली। तो मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपए यहाँ पे डाल दिए हैं अभी। अब इसमें से बाइस अपना कमीशन अलग काट लेता है और बाकी बचे पैसे वो ट्रांसफ़र कर देता है, ऐसा सीन रहता है। तो अभी मैं ओके कर दूंगा। यहाँ पे ये कंफर्म। तो आप जैसे अकाउंट नंबर डालोगे तो उसका नाम आ जाता है 22 पे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी गलत अकाउंट में डाल रहे हो पैसा। उसके बाद